Om. Sorry, I was talking to someone. So it looks like it's almost lunchtime, and I'm committing a big crime that I'm asking you guys to stay here and listen me. I am Professor Avinash. The topic is very important, especially for budding lawyers, because I can see only students here, some working professionals also here. The purpose of law schools. How law schools started, especially I think the young minds, please listen it very carefully, because there is a very big mistake is happening in India right now. And I was talking to some very senior general counsels outside. I won't name that law school, but there is one law school in Delhi, and they are graduating around 1,000 law schools every year. Overall, I believe around 1 lakh law graduates are coming in market, and Indian market is not able to take more than 5 to 7,000. So what is happening? So the first era of law school started in India when the Britishers gave the right to Indian lawyers that you can also appear in courts as a vakil, not as a barrister or solicitor, because to become a barrister and solicitor you need to go to UK, but if you want to practice in India as a vakil, then you need to go to a law school. So this is how we started our first generation law schools. Then it went very well, few law schools started. We produced our homegrown lawyers, or we call it vakil. They serve our lawyers and the legal community very nicely. Then more and more law schools started. Then there was a flood of lawyers during 1950s, 60s and 70s. So if I connect with literature, then maybe you heard about Harisankar Parsai. Have you heard about Harisankar Parsai in your life? So Harisankar Parsai wrote very nicely. He said, एक मुवक्किल को जब कोर्ट में जाए तो जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है वो है अपने आप को अपने लॉयर से बचाना. एक मुवक्किल का सबसे इंपॉर्टेंट काम है अपने आप को अपने वकील से बचाना, क्योंकि बाय दैट टाइम लॉयर्स की एक रेपुटेशन डेवलप हो चुकी थी कि दे आर नॉट सर्विंग द पर्पस ऑफ जस्टिस. सेकेंड फेज आई एनएलयूज की. Then there was a time where market was opening and we needed corporate lawyers. All NLUs worked very nicely. They graduated very top class lawyers. Now they are practicing in courts, they are working in top class law firms. Then with that success, many private as well as public universities started more law schools. And now there are around 2,000 law schools in India. 2,000. And you are one of them. My law school is one of them. What happened then? And what is going to happen now? There is going to be a serious issue of employment. There is a serious issue of skill. The topic today is not about what we should teach in law schools. That's a very different topic which I have not covered today. But the topic which is very relevant, what happens after law schools? Because in India, once you become an advocate, then you go to bar council, you pay, and you become an advocate. After advocate, there is no further training. Unlike UK and US, where you need to go for continuous education, continuous training, there is no such mechanism in our country. So law schools are saying that this is not our responsibility to train lawyers. Then the bar council
or the other associations are saying again, so this is not our responsibility. So what is happening? Most of the young lawyers or even the mid-level, they are having very, very tough time. In the absence of a proper mechanism where working professionals in courtroom or in boardroom, they can go for a systematic learning process. For example, now the new data privacy law is coming. All the lawyers or the corporate people, they are going to face it. How they can learn about data privacy law? Either by their own or by attending conferences where there is no systematic learning. Why can, just like IIMs and IITs, business schools, they have done very nicely. If you want to learn about financial management while working in a company, you can go to IIM Ahmedabad or Bengaluru, and you can do a 2 days, 3 days, short-term program, and you can have basic understanding of financial management or any leadership program. And that is for the working professionals. Law schools are not doing that thing in India, or very few, very few. Some of them are doing it, but they are doing it for the government officials, because those training programs are financed by the ministries, and as a matter of formality, few law schools, especially public universities, are doing it. What about the private? What about the lawyers who are practicing in courts? Then the alternative comes from the EdTech education. Few EdTech companies, I won't name them, but they are selling their very expensive certificate programs to young lawyers. And I am sorry to say that most of those certificate programs are not very useful, because they are one way. Law or the legal practice, you cannot learn through online. I am sorry to say, this is very clear, because law requires discussion, debate, argument, hands-on training. If you watch a video and you believe that you will learn about art of civil litigation, sorry, it will never happen. You need to be in a classroom, small classroom, where some senior person is coming and teaching and training you that what is the art of civil litigation. Then you will have 20 questions, that person will reply to you. I am sorry to say, online education can be effective maybe in engineering, where you don't need to have a discussion and debate and arguments. How to do coding? You don't need to argue. You just need to follow the process and you can become a good coder. But how to become a good IP lawyer? I believe that you need discussion, debate and argument. So these EdTech companies, they have made good money, but I don't think that they could make a serious impact in legal profession. So that's why today I talk about the purpose or the redefining the purpose of law schools. What is our role in 2047 when we say Viksit Bharat? What is Viksit? विकसित का मतलब है कि जीडीपी इतनी हो गई तो विकसित हो गए? नहीं, शिक्षित से भी नहीं है सर, शिक्षा भी प्रॉब्लम है. अगर शिक्षा से ही समाज में बदलाव आ रहा होता तो आज इतने जो फाइनेंशियल क्राइम हो रहे हैं, वाइट कॉलर क्राइम हो रहे हैं, वो शायद नहीं होते. पर्पज है कि एक सिस्टमेटिक ट्रेनिंग मैकेनिज्म डेवलप करें और लोगों को बताएं कि द पर्पज ऑफ एजुकेशन इज टू कंट्रीब्यूट इन समवन्स लाइफ एज ए लॉयर, एज ए लीगल प्रोफेशनल. बिकॉज एज ए लॉयर, व्हेन वी डू सम मिस्टेक, वी डोंट पे. हु पेज? आवर क्लाइंट. When you are in a company, if you give a wrong legal opinion to your company, who pays? CEO, CFO, the board, you don't pay. Lawyers are fortunately or unfortunately immune from this liability. क्योंकि दो क्लाइंट में एक तो हारना ही है. प्रॉब्लम वो नहीं है, प्रॉब्लम है क्वालिटी ऑफ लीगल सर्विसेज. हरिशंकर परसाई ने जो बोला था आज भी सच है. कितने ऐसे क्लाइंट हैं जो अपने लॉयर पे भरोसा करते हैं? आई थिंक वी हैव लॉस्ट दैट ट्रस्ट.
And as a law professor, I take the responsibility that it was a great failure of law professors and law teachers. हम क्यों वैसे स्टूडेंट्स नहीं बना पाए, हम क्यों वर्किंग प्रोफेशनल्स को ट्रेन कर पाए कि वो अपने क्लाइंट्स के कॉन्फिडेंस को दोबारा विन कर पाए. क्लाइंट आता है, पे करता है, आइदर इन कॉर्पोरेट और इन प्राइवेट, दे आर पेइंग बट स्टिल दे आर नॉट हैप्पी, दे आर नॉट ट्रस्टिंग देयर लॉयर्स. व्हाई? क्योंकि कहीं ना कहीं ट्रेनिंग में कमी रही. आई थिंक दिस फोरम, आज चंद्रचूड़ साहब कह रहे थे कि पर्पज ऑफ लिटरेचर इज टू ओपोज, जो आइडियाज हैं उनको चैलेंज करें. तो चैलेंज ये है कि पर्पज ऑफ एजुकेशन हैज टू चेंज. अगर कोई ये कहता है कि द पर्पज ऑफ लॉ स्कूल इज टू प्रोड्यूस इंडस्ट्री रेडी ग्रेजुएट्स, अभी यही चल रहा है सब जगह, इंडस्ट्री रेडी ग्रेजुएट्स. सॉरी, अगर यही पर्पज है, यू डोंट नीड लॉ स्कूल्स. वी शुड शट डाउन ऑल दिस 2000 लॉ स्कूल्स, क्योंकि विदाउट हैविंग एनी सीए और सीएस स्कूल, सीए एंड सीएस कम्युनिटी आर डूइंग फार बेटर. सीए का कोई स्कूल है क्या? सीएस का भी नहीं है, पर दे आर डूइंग बेटर, दे आर अर्निंग वेल, दे आर वेल ट्रेन्ड. सीए का बहुत सिंपल है, एग्जाम दो, 3 साल कहीं आर्टिकलशिप करो, फिर मेंस का एग्जाम दो, सिलेक्शन रेट इज ओनली 2 to 3%. फाइनली इफ यू बिकम सीए, एवरीबडी विल टेक यू. अनएम्प्लॉयमेंट का सीन ही नहीं है सीए में, बिकॉज ही इज स्किल्ड, ही इज इंडस्ट्री रेडी. तो अगर इंडस्ट्री रेडी पर्पज है, तो फिर तो लॉ स्कूल्स की जरूरत क्या है? लॉ स्कूल्स की जरूरत मुझे लगता है लार्जर है. ऐसे लॉ स्टूडेंट्स हमें बनाने हैं जो सोशली कॉन्शियस हो, क्योंकि एज ए लॉयर, whether you are in a courtroom or in a boardroom, your legal opinion is going to have serious impact on someone's life, liberty and property. कि 3 ही चीज होती है लॉ में, कि किसी की प्रॉपर्टी पे इंपैक्ट पड़ने वाला है. प्रॉपर्टी मीन्स फाइनेंशियल इंटरेस्ट. आपने लीगल ओपिनियन दी, कंपनी को 20 करोड़ का नुकसान हो गया. डू यू थिंक इट्स ए कंपनीज मनी? नो, इट्स ए स्टेक होल्डर्स मनी. कंपनी अगर 20 करोड़ लूज करती है तो स्टेक होल्डर 20 करोड़ लूज करते हैं. तो मुझे लगता है कि आज आप लॉ स्टूडेंट्स आए हैं, लॉ प्रोफेसर्स आए हैं, लॉयर्स आए हैं. धीरू भाई अंबानी लॉ स्कूल में जो हमारा पर्पज है, जो हम सोच रहे हैं, वो बड़ा सिंपल है कि डिस्कशन और डिबेट करते हैं कि जो 3rd लेवल जनरेशन लॉ स्कूल्स या लीगल प्रोफेशन बनाना है, वो विकसित भारत 2047 में क्या रोल है उसका, क्या हमारा कोई रोल है या नहीं है, पहले तो ये क्लियर कर लें. रोल है. यू कैनॉट हैव अ डेवलप्ड कंट्री विदाउट हैविंग क्वालिफाइड एंड टैलेंटेड लीगल पूल. आई आस्क यू वेरी सिंपल क्वेश्चन, हाउ मेनी लॉ स्कूल्स और इवन लीगल प्रोफेशन हैव यू एवर हर्ड द इकोनॉमिक एनालिसिस और इकोनॉमिक इंपैक्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर लॉ ऑन सोसाइटी? कंपनी लॉ का सोसाइटी पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है? एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर ऑफ कॉर्पोरेट लॉ और आईपीआर लॉ और क्रिमिनल लॉ, वो कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ में प्लस कंट्रीब्यूट कर रहा है या माइनस कर रहा है? ऐसी एनालिसिस ना तो लॉ स्कूल्स में होती है, ना कंपनीज में होती है. आई थिंक वी नीड टू वर्क टुगेदर. और कॉन्टिन्यूअस एजुकेशन, एग्जीक्यूटिव एजुकेशन इज द फ्यूचर. एग्जीक्यूटिव एजुकेशन इसलिए फ्यूचर है बिकॉज इफ लॉ स्कूल ट्रेन्स एग्जीक्यूटिव पीपल. I was just talking to my ex-student and my very good friend. He is the legal head of ICICI Housing Finance. I was just talking to him कि why can't we train working professionals? जब हम आपको ट्रेन करेंगे, we will learn from you. And when we learn from you as a professor, as a teacher, then we will teach better to our students. मुझे लगता है टाइम आ गया है. Let's open the gate of law schools. All the working professionals and students should meet, discuss. आप सब लोग यहाँ क्यों आए हो? Why are you here? 90% का aim ये है कि today I am going to learn something new. I am going to meet some senior people. I am going to get that
विजिटिंग कार्ड कि कल इंटर्नशिप में हेल्प होगी, है या नहीं है? किसी सीनियर से मुलाकात होगी, हो सकता है हमें इंटर्नशिप में हेल्प करे, प्लेसमेंट में हेल्प करे. You want to meet them, but we law schools are closed. We only call them for 1 hour guest lecture. That's not sufficient. We need to call them for 2 to 3 days executive education in the law school. So students and working professionals can meet, discuss, argue, debate, discuss. मुझे लगता है टाइम आ गया है दोस्तों, और आज बहुत अच्छी विधि उत्सव, मैं हिंदी में इसलिए बीच में बोल रहा हूं क्योंकि विधि उत्सव नाम रखा है इन्होंने. विधि उत्सव क्यों रखा? ये तो लॉयर्स फेस्टिवल, लॉ फेस्टिवल भी रख सकते थे. अगले साल हम प्रयागराज जा रहे हैं. हमें ये कॉलोनियल माइंडसेट भी रिमूव करना है कि अगर आप इंग्लिश में लॉ पढ़ोगे तो ही आप सक्सेसफुल होंगे. नहीं, आप जिस लैंग्वेज में लॉ पढ़ो, अगर आप में स्किल है, कॉन्फिडेंस है, इंटीग्रिटी है, नोबडी कैन स्टॉप यू. अगर आप में इंटीग्रिटी है, स्किल है, फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, to become a successful lawyer you don't need very genius mind. I asked my first senior in Delhi High Court, senior advocate Sri P.P. खुराना जी, कि सर सक्सेसफुल लॉयर कैसे बनते हैं? कि बेटा एवरेज माइंड चाहिए. मैंने कहा दैट्स इनफ. कि बस दैट्स इनफ, एवरेज माइंड. बहुत ज़्यादा जीनियस लोग सक्सेसफुल होते भी नहीं है लॉ में. लॉ रिक्वायर्स एवरेज माइंड बट विथ हार्ड वर्क, स्किल सेट एंड इंटीग्रिटी. अपने क्लाइंट के लिए इंटीग्रिटी. तो ये सिर्फ चीज़ आप डेवलप कीजिए. थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी. इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फिनिश इन 15 minutes फॉर ए प्रोफेसर, बट आई ट्राइड माई बेस्ट. थैंक यू.